Now, former Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur has expressed strong disapproval of the current state government. Now, Jairam Thakur has described the situation as very unfortunate and sad to hear, accusing the government of being incapable of doing anything to address the financial issues facing Himachal Pradesh. Now, viewers, what has happened is that Himachal Pradesh High Court has issued an order attaching Himachal Bhavan in Delhi after the Congress-led Sukhwinder Singh Sukhu government failed to pay the electricity dues amounting to around 150 crore rupees. Now, the court has also directed the Principal Secretary of the Power Department to conduct a fact-finding inquiry to identify the officials responsible for the negligence that has led to this situation. So it's a very big embarrassment, viewers, for the Sukhu government, the Congress-led government in Himachal Pradesh. And of course, the BJP is taking pot shots at the Congress, mocking at the Kata. बोला जाता है कि टॉयलेट टैक्स लगा दिया गया, कभी बोला जाता है कुछ और किया जाता है। तो ये सब चीजें चुनावों के वक्त क्यों आती है, और चुनावों के वक्त इसको झूठा प्रचार है, ये कोई सत्य प्रचार नहीं। अब हम तो कभी दिल्ली में इतने ज्यादा पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं नहीं, पर दिल्ली की खबरों में पड़ता लगता है, और आपके जो हिमाचल की न्यूज चैनल है उसमें ये न्यूज़ें चलते नहीं है। तो ये सब चीजें राजनीतिक तौर से दुष्प्रचार की चीजें हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास? नहीं, सरकार को डिस्टेबलाइज करने का तो प्रयास नहीं है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास जरूर है। धन्यवाद। थैंक यू। That was the Chief Minister Sukhu's latest reaction. He earlier had, in fact, feigned ignorance, and now he's again trying to just downplay what has happened, because this is a High Court order, viewers. This is not something that has been just alleged by the BJP or any other party or by media. As he's saying right now, he's the Chief Minister, Sukhwinder Singh Sukhu, has said that this is something that the opposition is trying to derive political mileage out of. Take a listen to what Jairam Thakur, BJP leader and former Chief Minister, had to say. सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट का फैसला 13 जनवरी 2023 को आया, और उसके बावजूद भी सरकार जो है वो गंभीरता से इसको नहीं ले रही है। ये जो सेली प्रोजेक्ट का अपफ्रंट प्रीमियम का जो पैसा 64 करोड़ रुपए देने के लिए आदेश हुए थे, मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं, और लगभग 6 करोड़ रुपए जो है उनकी फीस हो गई, और एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के एक दिन में लेंगे, उसके लिए पैसे हैं, उसके लिए वकील हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है, और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो मंडी ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है, उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई। पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है, और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। में खाने को नहीं, अम्मा चली भुनाने। अब घर को जो है वो लुटा करके और तमाशा देखने का कांग्रेस का बहुत पुराना खेल रहा है। आपको जो है वहां पर जो है वो उसकी आपकी फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह से डामाडोल है, ध्वस्त है, उसके बाद भी आप खटाखट फटाफट टकाटक सब सारी चीजें कर रहे हैं। उसका नतीजा हो रहा है कि आपके खुद के जो है वो जो संसाधन है वो नीलामी के कगार पे खड़े हो गए हैं। मिस्टर राहुल गांधी's unsound, unsafe and weird economic ideas have turned out to have a disastrous domino effect on
Himachal Pradesh and other Congress governments. Today, as a result, the Himachal government's economy stands wrecked and ruined, so much so that they can't even pay electricity dues to power companies. This is the same Himachal Pradesh, we should remember, where the first family of the Congress, the Nehru Gandhi dynasty, comes to their summer vacation home. You have seen these Congress leaders in Himachal Pradesh fawn and make such a fuss over their visits. If the Himachal government and its leaders had only shown half of the care and concern that they show when the Gandhi dynasty comes to Shimla for their summer vacation home, today Himachal Bhavan, the building of prestige, it's a landmark of prestige in Delhi, would not face such danger. The High Court has given a very clear directive to attach Himachal Bhavan because the state government has failed to pay its dues even after repeated reminders. This shows the recklessness and the careless attitude of... And Republic TV has spoken to the Advocate General of Himachal Pradesh, Anup Ratan, on the matter. Take a listen in. I would correct you that it is not the failed to pay but we have not deposited it because there was stay operating, but we thought that the matter should be heard by the division bench at the earliest. So we were requesting time and again to the division bench to hear this matter at the earliest. The controversy which is presently wrapped up is that the single judge in execution petition has directed to attach the property of Himachal Bhavan for non-payment of 64 crore rupees ordered by a single judge in a writ petition whereof an LPA is pending in the High Court. So since our appeal is pending in our High Court and we are pressing hard for early hearing of that appeal, and the court has given us date in near future in this month itself, so the matter would be heard finally by the division bench of the court shortly, I suppose. Mr. Ratan, the court had already warned the government in this regard, saying that if they fail to pay the 64 crores, which was the actual due, they will have to bear the brunt, and which also led to the increase in the amount, which is now 150 crores, including the interest. So that is called the failure to the payment of the dues. No, this all is with respect to the judgment of single judge. Actually, what had happened, the government has suffered a loss of around 700 crore up to now because of non-construction of this project by the company. It's the company that failed to construct the project. The company was allotted this project way back in 2009. PIA was entered into in 2011.